Hello, myself Himanshu Padidar. Today we start Plant Kingdom. Neet pyqa. The first question is identify the pair of heterospores pteridophytes among the following. नीट 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है जो कि इक्वेसिटम एंड सलाइवा फर्स्ट लाइकोपोडियम एंड सेलेजिनेला थर्ड इज इक्वल टू सेलेजिना एंड साल्विया डी इज इक्वल टू सिलोटम एंड साल्विया. तो करेक्ट ऑप्शन इज इक्वल टू सी जो कि सेलेजिनेला एंड सेल्विया इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट असर्शन रीजन है द फर्स्ट स्टेज ऑफ गेमेटोफाइट इन द लाइफ साइकिल ऑफ moss in protonema stage. Reason is the protonema develops directly from the spores producing capsule. So option number B is the correct option. Next, assertion reason figures hai. In the gymnosperm, the pollen grains are released from the microsporangium and carried by air current. Reason is equal to air current carry the pollen grains to the mouth of the archegonia where the male gametes are discharged and the pollen tube is not formed. The 2023 का नीट PYQ है तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी. डी इज द करेक्ट ऑप्शन. डी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है हाइड्रोक्लोराइड्स कैरोग्रीन इज ऑब्टेन फ्रॉम. 2022 का क्वेश्चन है. फोर्थ क्वेश्चन है द क्लोरोफाइसी एंड फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी ओनली एंड फियोफाइसी. द करेक्ट ऑप्शन इज C. C is the correct option. Which of the following is incorrectly made? 2022 में आया हुआ है एक्टोकार्पस फ्यूकोजेंथिन यूलोथ्रिक्स मैनिटोल पोरिफायरा फ्लोरिडियन स्टार्च वॉल्वेक्स. इनकरेक्टली बताया गया है, इनकरेक्टली बोला गया है जो कि फिफ्थ का बी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट कैराग्रीन लाइक सिक्स्थ क्वेश्चन है genera like Selegina and Salvia produce two kinds of spores. Such plants are known as. 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है जो कि हेट्रोस्पोरस, बी इज इक्वल होमोस्पोरस, सी इज इक्वल टू हेट्रोस्पोरस एंड डी इज इक्वल टू होमोसोर्स. तो सिक्स्थ का करेक्ट ऑप्शन है सी. सी इज द करेक्ट ऑप्शन. Seventh, which of the following algae contains mannitol and reserve food material? 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है Galacellaria, Volvax, Ulothrix, Ectocarpus. The option is Galacellaria, option B Volvax, option C Ulothrix and option D Ectocarpus. Seventh का D is the correct option. Ectocarpus. Ectocarpus is the right option according to the question. Question number 8. Gamma are present in 2021 का क्वेश्चन है जो कि नीट में आया हुआ क्वेश्चन है. A is equal to pteridophyte, B is equal to some gymnosperm, C is equal to some liverwoods and D is equal to mosses. Option number C is the correct option. Some liverwoods. Option question number 9. Strawberry cones are found in 2020. The question है A is equal to Terries, Mercantia, Equisitum, Salvinia. Question number 9 का C is the correct option. C is the correct option. Next question 10th. Which of the following pairs of unicellular algae कौन सा करेक्ट ऑप्शन है जो कि पेयर में
ये 10th क्वेश्चन है अपना। तो गैलेडियम एंड गैलेनेरिया, एनाबिना, वल्वेस, क्लोरेला, स्पाइरुलिना, लेमिनेरिया एंड सरगासम। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 10th, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना। Floridian starch has structure similar to amylopectin and glycogen, mannitol algin, laminaria and cellulose starch cellulose. Question number 11 का A is the correct option. Amylopectin and glycogen. Male and female gametophyte do not have an independent free living existence in 2020 कोविड री नीट का जो है A इजिकल टू एल्गी, B इजिकल टू एंजियोस्पर्म, C इजिकल टू ब्रायोफाइट, D इजिकल टू टेरिडोफाइट। क्वेश्चन नंबर 12, ऑप्शन नंबर B इज द करेक्ट ऑप्शन, एंजियोस्पर्म, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, कोरेथ्रिन इज द मेजर पिगमेंट 2020 कोविड री नीट का क्वेश्चन है। ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी। क्वेश्चन नंबर 13, द राइट ऑप्शन इज डी, रेड एल्गी। नेक्स्ट 14th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म के लिए इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है? मेल एंड फीमेल gamete are free living, most of them have narrow leaves with a thick cuticle, their seeds are not covered, they are heterosporous। क्या ये heterosporous है? 14th का is the correct option with respect to question number 14। from from evolutionally point of view, retention of the female gametophyte with a developing young embryo on the parent sporophytes for some time is first observed in 2020। 2019 का क्वेश्चन है। लिवरवुड्स मोसेस टेरिडोफाइट जिम्नोस्पर्म। क्वेश्चन नंबर 15, सी इज द करेक्ट ऑप्शन, टेरिडोफाइट इज द करेक्ट ऑप्शन। Next, pinus seed cannot germinate and establish without fungal association. This is because of its embryo in nature. It has obligate association with mycorrhiza. It has hard seed core. Its seeds contain inhibit that prevent germination। तो सिंपल क्वेश्चन है जो कि नीट 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 का बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इट हैज द ऑब्लिगेट एसोसिएट विद माइकोराइजा। माइकोराइजा से फ्रेंडशिप हुई रहती है। Which of the following statement is correct? 17, the ovules are not enclosed by ovary wall in the gymnosperm. Senegenera is heterosexual while the salvia is homosporous. Hostile are gymnosperm. Stem are usually unbranched in both cycles and cedar. Which of the following statement is correct? Correct option. So A is the correct option. Ovules are not enclosed by ovary wall in gymnosperm। Which one is wrongly matched? Wrongly matched कौन सा है? Uniflagellated gamete, polycyphonia, biflagellate zoospores, brown algae, gameca, mercantia, unicellular organelle, chlorella। तो ये क्या है? 18th का A is the correct option, uniflagellate gametes, polycyphonia। Winged pollen grains are present in, winged pollen grain कहाँ में present रहेगा? ऑप्शन ए मस्टर्ड, ऑप्शन बी साइकस, ऑप्शन सी मैंगो, ऑप्शन डी पाइनस। तो इसमें ऑप्शन डी इज इक्वल टू पाइनस इज द करेक्ट ऑप्शन। डबल फर्टिलाइजेशन इज exhibited by gymnosperm, algae, fungi, angiosperm। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन, एंजियोस्पर्म। Zygotic meiosis is characteristic of Mercantia, Fucus, Funaria, Chlamydomonas। Option A Mercantia, option B
Fucus option C, funaria option D, chlamydomonas. Option D is the correct option, chlamydomonas. An example of colonial algae is Chlorella, Volvox, Eurothrix and Aspiron. Most common question है जो कि option number B is the correct option. Volvax is the correct option B. Question number 23. What is not true for an angiospermic embryo sac? Question जो कि नीट 2017 में हुआ है. One male gamete is discharged into the during fertilization. It is present within ovule. It represents female gametophyte. Its formation is preceded by meiosis. The option A is the correct option. 24. Identify and select the wrong statement out from the following. In conifers, the needle-like leaves are well adapted to extreme and temperature, moisture conservation, and onslaught of wind. Root of pinus enter into the symbiotic relation with the higher fungi. The coral roots of cycas has nitrogen fixing cyanobacteria. D is equal to the giant redwood tree sequoia, one of the tallest tree of the angiosperm. Identify the wrong statement. Wrong statement अपने को find करना है. A is the correct. Next, which of the following statement is wrong? Agar agar is obtained from Galidium and Gallisneria. Laminaria and sargassum are used as food. Algae increase the level of dissolved oxygen in the immediate environment. Algin is obtained from red algae and carrageenan from brown algae. Which is wrong statement? जो कि 25 with respect to D is the correct option. Select the correct statement. Gymnosperm are both homospores and heterosperm. Salvia, ginkgo, and pinus are all the gymnosperm. Sequoia is one of the tallest tree. The leaves of the gymnos are not well adapted to extreme conditions. क्योंकि correct option है 26 का. C is the correct option. Sequoia is the tallest tree. Which of the wrong statement? Mucor has biflagellate zoospore. Haploid endosperm is typically features of gymnosperm. Brown algae have chlorophyll A and C and fucosanthin. Archegonia are found bryophyta, pteridophyta and gymnosperm. Option number 27. Option number A is the correct one. Mucor has biflagellate zoospore. Question number 28. Male gametes are flagellated in 2015 में हुआ नीट में. Ectocars, Spirogyra, Polysyphonia and Anabina. 28 का A is the correct option, Ectocar. 29. Isogamous condition with non-flagellated gametes is found in 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है जो कि नीट में आया हुआ है. PYQ है. Option number A, Fucus. Option number B, Chlamydomonas. Option number C, Spirogyra. Option number D, Volvax. जो कि C is the correct option. Select the wrong statement. Chlamydomonas exhibit both isogamy and anisogamy, and Fucus shows ogamy. Isogamy are similar in structure, function, and behavior. Anisogamies differ either in structure, function, or behavior. In ogamous reproduction, female gamete is smaller and motile, while male gamete is large and not motile. तो इसका D is the correct option. Thank you for next chapter PYQ. Follow the channel The Medico Bachcha. Thank you.